Hello everyone, welcome to my channel and welcome to a new video. So today I'm going to do a miniature painting. मिनिएचर पेंटिंग करने के लिए मैंने लिया है ये छोटा सा पेपर एंड जिसका साइज है लिटरली 5 सेंटीमीटर. लेट मी शो यू. See how cute and how tiny. So let's start the painting. And what I am going to paint is a surprise today. Starting with a green color. By the way, I'm using Dom's watercolor painting here. ग्रीन कलर से मैंने बहुत सारा घास उगा दिया है. I mean पेंट कर दिया है यहाँ पे मेरा छोटा सा क्यूट सा मिनिएचर कैनवस पर. Adding some pahad there. सो गाइस, घास और पहाड़ देख के आप लोग गेस कर चुके होंगे आज मैं किस रिलेटेड पेंट कर रही हूँ. पहाड़ के नीचे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कुछ पत्थर. सो गाइस, दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू. माय नेम इज़ मिमी and this is my art channel. If you are liking my video, then subscribe my channel. After complete painting pathar, we are going to start painting the Neela Samandar. I am highly obsessed with miniature things, so that's why मैंने choose किया है ये idea to paint a miniature canvas. देखो गाइस, कितना छोटा पेंटिंग है ये, नन्ही सी पेंटिंग. अब मैं यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे पेंट कर रही हूँ. दिस टाइप्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग करने के लिए बहुत सारा एफर्ट की ज़रूरत होती है. अगर आप पेशेंस के साथ एंड पेंट करते जाओगे then you will feel calm and your depression will go away. कुछ और पेड़ पौधे मैं यहाँ पे ऐड करते जा रही हूँ. So guys, my art piece is almost done. I'm so excited to see the final outcome. Don't go anywhere, stay with me. And it's done, and I am fully satisfied with my art piece. What do you guys think about this painting? Let me know in comment box. Let me show you one more surprise, and ta-da! So this is the mother version of this baby painting. That's it for today's video. And if you are enjoying my video, then please do like, share and subscribe my channel. And ta-ta, bye bye. Enjoy the rest of the video.